is the screen visible? Yes, yes, yes. Yes. Acha. So first of all, I'll I'll start with the discussing these keywords first of all, and then I'll give a few tips. So okay, directly first of all discuss. ठीक है? देखो डिस्कस ना सबसे ब्रॉड वाला टर्म है. सो एसेंशियली दिस इज द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एंड सबसे इजी होता है इस पे लिखना. ठीक है? एसेंशियली तुम्हें जितना भी आता है टॉपिक के बारे में इसमें यहाँ पे यू हैव टू राइट आउट. ठीक है? If you want, you can incorporate different opinions. You can write the pros and cons, the positives and the negatives. You can simply explain the topic. ठीक है? जो भी whatever you want to write, you can write in this question. But yes, read the question properly. समटाइम्स क्या होता है ना कि क्वेश्चन ही पता लग जाता है कि क्या पूछना चाह रहे हो. जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, आरटीआई एक्ट इज नॉट अबाउट सिटीजन एम्पावरमेंट, इट एसेंशियली रीडिफाइंस द कांसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी. डिस्कस. तो इसमें क्या तुम्हें डिस्कस करना है? तुम्हें आरटीआई एक्ट डिस्कस नहीं करना है. ठीक है? तुम्हें डिस्कस करना है अकाउंटेबिलिटी एंड द इफेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन द आरटीआई एक्ट. मतलब आरटीआई एक्ट कैसे अकाउंटेबिलिटी लाया, व्हाट आर द प्रोविजंस बाय व्हिच द आरटीआई एक्ट ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. यू आल्सो हैव टू राइट अ लिटिल बिट अबाउट सिटीजन एम्पावरमेंट. ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर दीज कीवर्ड्स की क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ना, पढ़ के फिर आंसर लिखना चालू करना. ठीक है? जैसे यहाँ पे इट्स वेरी इजी टू मिस, इट इज ऑल्सो आस्किंग अ लिटिल बिट अबाउट सिटीजन एम्पावरमेंट. ठीक है? लोग अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी लिखना लिख के आंसर खत्म कर देंगे, बट नो, यू हैव टू राइट लिटिल बिट ऑफ दिस ऑल्सो. ठीक है? नाउ इवैल्यूएट, असेस और एग्जामिन. ठीक है? अच्छा. So yes, first of all, this is also pretty easy to understand. Essentially, you have to give a explanation on the topic. ठीक है? Explanation तुम्हें देना पड़ेगा. You have to give मतलब whatever argument you are giving, you have to give both the positive of the argument. You have to give the negatives of the argument. ठीक है? Pros और cons दोनों दिखाने हैं. Positive negatives दोनों दिखाने हैं. ठीक है? And accordingly, and in the conclusion, you can either present the way forward or you can take a positive outlook. और यू कैन टेक अ बैलेंस्ड ओपिनियन. ठीक है? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन अगेन. जैसे यहाँ पे हो गया, दिस वाज इन 2018 आई थिंक. दिस क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कैन सेटल द पॉलिटिकल एंड टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. ठीक है? देखो ऑब्वियसली इसका आंसर हम लोग को मोटा मोटी पता ही है. ठीक है? ऑब्वियसली वी कैन नॉट से कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन नॉट सेटल दिस डिसीजन, बट मतलब एसेंशियली वी हैव टू प्रेजेंट बोथ. कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले तो बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था क्या. ऑब्वियसली तुम लोग अभी याद नहीं रहेगा क्योंकि दिस इज अ वेरी ओल्ड टॉपिक. So yeah, first of all, you will have to firstly briefly say what the court judgment was. Secondly, then you will have to say what the tussle between them was. Okay. Then you will have to say yes, it can. Then you will have to say no, it cannot. Okay. And then at the end, you will have to take a balanced view. Okay. Or you can present the way forward. It depends on you. Now, critically examine. बस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे critically add हो गया. Okay. अच्छा, इसमें इन दोनों में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में एक एसेंशियल चीज जो है वो क्रिटिकल. ठीक है? क्रिटिकली जहां पे भी तुम्हें क्वेश्चन पे दिखेगा क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली ये, क्रिटिकली वो, you will always have to give the positive and the negatives. You will always have, it's necessary to write both the pros and the cons. अब तुम पूछोगे कि सर इसमें और इसमें फर्क क्या है. ठीक है? इसमें फर्क यही है कि क्रिटिकली अगर तुम्हें कहीं पे भी दिख गया, regardless of whatever the statement is, you will have to write the pros and the cons. Okay? यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इट कैन ऑल्सो मतलब इस क्वेश्चन में तो तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स लिखना है, बट देयर विल ऑल्सो बी क्वेश्चंस वेयर इट विल नॉट बी पॉसिबल टू राइट द कॉन्स और द नेगेटिव्स. ठीक है? बट क्रिटिकली एग्जामिन तुम्हें स्टेटमेंट ही ऐसा दिया जाएगा कि इट विल बी पॉसिबल टू राइट बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट. ठीक है? यू विल हैव टू टेक एसेंशियली डिबेट कर रहे हो तुम, यू विल हैव टू प्रेजेंट बोथ फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक. ठीक है? मतलब आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स दे विल जस्ट राइट द pros, they will not write the cons, or they will forget to write the cons. Critically अगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, then you will have to write the cons. Okay? ऐसे ये वाला क्वेश्चन हो गया. Can provide viable solutions to the multidimensional integrated problems of droughts, floods, and interrupted navigation. Critically examined. ठीक है? मतलब you will have to say कि yes, it will provide viable solutions. Then you will have to say कि no, it cannot provide because of these reasons, and it will have multidimensional effects. ठीक है? Again, I'm repeating this because it's very confusing. यहाँ पे और इसमें फर्क क्या है? फर्क इसमें यही है कि डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन और दिस वन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू कैन टेक द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आउटलुक्स. यू कैन आल्सो मतलब आंसर यू कैन प्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट वे. ओके?
This question में you can present the positive and the negative, but uh, in a different type of a question, it's not necessary to write the pros and the cons in this kind of question. Okay, essentially you will just have to explain whatever the topic is given. Like in this one, you will have to explain, but you can also give the pros and the cons. But critically examine में जहां भी तुम्हें दिया हुआ रहेगा, you will have to write the cons. ठीक है? Again, take all of this. अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में अभी नहीं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ. Analyze. देखो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, एनालाइज एंड इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है. बस इसमें इतना सा ही है कि जो भी आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है क्वेश्चन का, यू विल हैव टू एड्रेस दैट. ठीक है, मतलब यू हैव टू हिट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो सब में करना है, बहुत जल्दी. चलो. हाँ, एनालाइज में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यू कैन इनकॉर्पोरेट मल्टीपल एंगल्स टू द सेम टॉपिक. ओके, अगेन सेम सिमिलर टू दिस, सो इट्स नॉट मच डिफरेंट. बस it अलग से दिया हुआ रहता है. बस इसको देख के थोड़ा सा डर मत जाना, दिया हुआ रहता है अलग से. जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, एनालाइज द मेजर रीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन. ठीक है, अगेन इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. एनालाइज जहां भी दिया हुआ रहेगा, इट्स वेरी सिंपल. बस यू हैव टू लाइक प्रेजेंट योर व्यू पॉइंट. एक्सप्लेन, इलैबोरेट, कमेंट. देखो ये सबसे इजी है, सबसे इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एसेंशियली जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल्ड मैनर. ठीक है, यहाँ पे you don't have to write the pros and cons. You just have to, you can write one view. You can just explain the topic. You can, मतलब whatever approach you want to take in this question, so you can do that. If you want to write the way forward, that is also okay. But you don't have to write the pros and cons in these types of questions. You just have to explain कि मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो उस टाइप का you have to explain. ठीक है, okay. अच्छा, अच्छा इन चीजों में ना, जो जहाँ पे भी क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, कीवर्ड्स तो बाद में आएंगे, बट हमेशा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कीवर्ड्स अंडरलाइन करना, आई अंडरस्टैंड इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज देयर इज अ बिग बट. कीवर्ड्स के चक्कर में डोंट फॉरगेट व्हाट द एक्चुअल क्वेश्चन इज अबाउट. ऐसे ये वाला क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी देखेंगे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देखेंगे, दोनों को एक्सप्लेन करके आ जाएंगे एंड सोचेंगे वाह बहुत आंसर आंसर अच्छा लिखेंगे. क्वेश्चन क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द कोर्ट्स. लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द कोर्ट्स मतलब क्या हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में वो पूछ रहे हैं. ठीक है, essentially what I'm saying is read the question properly before answering the question. ठीक है, सिर्फ कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आंसर लिखने से नहीं होगी. ओके, यहाँ पे तुम एक्सप्लेन देख लिए, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी देख लिया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देख लिया, आंसर लिख के आ गए, नहीं. रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली देन आंसर. ओके, अच्छा एलुसिडेट. एलुसिडेट मतलब there is a statement which will be given. Okay, you will have to take this statement. You have to assume that this statement is not very clear. Not very clear in the sense, it's, essentially you have been given the statement. You have to explain that topic. Explain that topic in a much more comprehensive manner. Okay, मतलब पहले समझ लो कि एग्जामिनर को स्टेटमेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है. यू हैव टू प्रॉपर्ली एक्सप्लेन इट टू हिम. ओके, इसका फॉर्मेट क्या हुआ रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में यू तुम्हें पहले यू हैव टू डिफाइन द टॉपिक व्हिच हैज बीन गिवन. डिफाइन कर दो उसको. Then in the body, explain the topic which is given. Okay, properly explain it and use data and facts. Data and facts are very important in elucidate type of questions. Okay, बाकी सब में if you don't remember चल जाएगा काम, but इसमें लिखना पड़ेगा. Okay, कंक्लूजन में essentially जो भी तुमने अभी तक लिखा है उसको समराइज करके ब्रीफली समझा दो कि मैंने I have explained this much. And that is why the statement was given. Okay, the examiner should not feel after reading the conclusion that you have not been able to explain the topic properly to him. Okay, that is what elucidate means. जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इज इंडिया ओन इनोवेशन has proved to be one of the most effective poverty elimination. elucidate. Okay, essentially ये स्टेटमेंट को तुम्हें करना है एक्सप्लेन. तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सप्लेन करना है, बट डिफाइन करना है ब्रीफली. अगर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सप्लेन करें. ठीक है, बट देखो ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है टॉपिक. अगर नहीं भी आ रहा, थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही रहा है ना किसको होगा ये प्रोग्राम. देन यू इन द बॉडी यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस, मतलब हाउ दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम हैज
helped in poverty alleviation and in women empowerment. Okay. Both, you have to explain both, you have to give facts and data. Then in the conclusion, you will have to summarize everything that you have said and say this is the reason why it has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment program. Okay, तो मैं बहुत क्रूड तरीके से बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारा फॉर्मेट यही होना चाहिए. अच्छा, सब्सटैंशिएट. अच्छा, सब्सटैंशिएट और एलोसिडेट में फर्क इतना है कि एलोसिडेट में यू आर फ्री टू टेक वट एवर व्यू पॉइंट यू वांट टू. ओके, व्यू पॉइंट तो जरूरत नहीं पड़ती इसमें. एसेंशियली जो एलोसिडेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, यू विल जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक. सब्सटैंशिएट में क्या होता है, you will have to give reasons to support it. Okay, मतलब generally ऐसे questions जो होते हैं ना substantiate वाले, essentially the examiner already has taken a stand in the question itself. Okay, you will just have to support the view that is given in the question. जैसे ये वाला question हो गया, growth of cities as IT hubs has opened up new avenues of employment but has also created new problems. देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड से तुम्हें पता लग ही रहा है कि एग्जामिनर एक ऑलरेडी स्टैंड ले चुका है इसमें. ही इज सेइंग कि हाँ, इट इज आईटी हब्स हैव ओपनड अप न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट इट हैज क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स. ही हैज ऑलरेडी टेकन अ स्टैंड. ही इज नॉट, अगर ही इज नॉट आस्किंग योर ओपिनियन कि डू यू एग्री और डू यू नॉट एग्री. ही इज टेकन अ स्टैंड. You just have to substantiate the statement. You have to support the statement that has been taken by the examiner. Okay. हाँ, substantiate वाले questions में you will always have to give examples. Okay. देखो यार, एग्जांपल्स एंड डेटा तो जनरली सारे कीवर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. सब्सटैंशिएट, फॉर एग्जांपल सब्सटैंशिएट, फॉर एग्जांपल एलुसिडेट. इन सब इन दीस कीवर्ड्स डेटा एंड फैक्ट्स आर मोर नेसेसरी देन द अदर्स. जस्टिफाई. जस्टिफाई में you have the freedom to take whatever viewpoint you want to. Okay, you can take your viewpoint for, you can take a viewpoint against, but whatever viewpoint you take, you will have to support it completely. Okay, you should have enough arguments to support your viewpoint. Take the viewpoint accordingly. Okay? Essentially, मतलब you're having a debate and you're standing for or against, not both of them at the same time, which you are doing in critically examining. Okay. For example, do you think that India will meet 50% of its energy needs from a renewable energy by 2030? Justify your answer. You can either say yes, India will meet, or you can say no, India will not meet, and these are the reasons. Okay. Again, facts and data are important. That is how you can substantiate your answer. Okay. So more or less itna tha. I will just like to add a few things apart from this. Way forward कौन से क्वेश्चन में लिखना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू नॉट हैव टू राइट वे फॉरवर्ड इन एवरी सिंगल क्वेश्चन. ठीक है, डू नॉट हैव दिस मिसकंसेप्शन कि क्वेश्चन है तो मुझे वे फॉरवर्ड लिखना ही है. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. फॉर एग्जांपल यहाँ होता, फॉर एग्जांपल इफ आई हैड बीन गिविंग these writing these many answers, I would have given a way forward in this answer, I would have given a way forward in perhaps this answer, I would have given a way forward in this answer. नॉर्थ ईस्ट वाले में, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स वाले में, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट वाले में. आई वुड नॉट हैव गिवन अ वे फॉरवर्ड इन दिस आंसर. ठीक है, आई वुड नॉट हैव गिवन अ वे फॉरवर्ड इन दिस आंसर. आई वुड नॉट हैव गिवन अ वे फॉरवर्ड इन दिस. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ के इफ यू आर फीलिंग कि दिस क्वेश्चन इज रिक्वायरिंग अ वे फॉरवर्ड, देन गिव अ वे फॉरवर्ड. I always used to, if I am writing the way forward, I generally did not write it in the conclusion. I generally made a proper chart like this. These are the many points that I'm going to write in the forward. फिर मैं way forward लिख देता था. तो handwriting इतना बुरा तो नहीं था, but ऐसे करके arrows तक बना के I used to write the way forward. Okay. सारे क्वेश्चन पे मतलब जहाँ पे भी मुझे way forward लिखना होता था, I wrote it like this. There is also an option that you can also write it in the conclusion, but that entirely depends on your discretion. I generally did not write it in the conclusion. If you want to write it, it's fine. You can do it. So read questions carefully. I have already said that. Achha. Thirdly, whatever I have said, take this with a pinch of salt. Essentially, first of all, मैं honest एक चीज बता रहा हूँ. एग्जाम हॉल में तुम लोग को टाइम ऑनेस्टली नहीं मिलेगा, बट फिर भी एक बार कीवर्ड्स
थोड़ा ध्यान से देख लेना। ऐसा नहीं है कि क्रिटिकली एग्जामिन दिया हुआ है, तुमने इसको मिस कर गया एंड देन यू रोट ओनली एग्जामिन, यू फॉरगॉट टू राइट द कॉन्स, यू वोंट गेट मार्क्स। ठीक है, बट एट द सेम टाइम प्लीज ज्यादा लोड मत लो उसमें। ठीक है, नॉर्मली मोरलेस हम लोग को आइडिया है कि कौन से क्वेश्चन में डिमांड क्या है, जस्ट गो बाय दैट डिमांड। ज्यादा लोड मतलब कि अरे यू रीडिंग द क्वेश्चन हियर कि डिस्कस एंड देन यू सीटिंग कि सर ने नहीं तो नहीं बोला था कि मुझे प्रोस एंड कॉन्स लिखना है, इसमें मैं कैसे प्रोस एंड कॉन्स लिखूं। इफ योर थॉट प्रोसेस इज थिंकिंग कि प्रोस एंड कॉन्स विल बी साउंडिंग गुड इन दिस आंसर, देन राइट द प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है, या फिर यहाँ पे एनालाइज में इफ यू वांट टू राइट द प्रोस एंड कॉन्स अगेन, इट्स completely fine if your thought process depending after reading the question, if your thought process feels ki this is I have it's better if I write the pros and cons, then please go ahead। ठीक है, ज्यादा लोड मत लो, नोट्स बनाने मत बैठ जाओ यहाँ पे कि सर ने ये बोला था तो मैं नोट बना लेता हूँ डिटेल्स है मुझे यही लिखना है, नहीं, दैट इज नॉट हाउ कीवर्ड्स वर्क। ठीक है, तो अगेन keywords are underline करना, I also used to do the underline the keywords, but again I'm repeating this, do not overdo it। ठीक है, read the question thoroughly, more important than the keywords is the question। keywords तुम्हें कहाँ इंपॉर्टेंस होगा, सोसाइटी वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़ा बहुत अ, जो इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा फिरा के पूछे हुए रहते हैं, इनमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। रीजंस व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज, इकोनॉमी में उतना भी नहीं होता है बट थोड़ा बहुत होता है। सोसाइटी एंड गवर्नेंस में तो होगा ही होगा, बिकॉज क्वेश्चंस घुमा फिरा के वो पूछते हैं एंड समझ में नहीं आता कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस you will have to underline the keywords and then you will have to write the answer। okay, सोसाइटी में that is always this year at least that is how I approach the society questions। सोसाइटी और गवर्नेंस में क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं, मतलब एक्चुअली वो जो क्वेश्चन होता है डिमांड दैट इज वेरी इजी, बट वो दे आस्क दिस क्वेश्चन सच अ ट्विस्टेड मैनर कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। दैट इज व्हाई अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स इन सोसाइटी एंड गवर्नेंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट अगेन डू नॉट ओवरडू इट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड देन अकॉर्डिंगली राइट द आंसर। ओके, it basically ज्यादा मतलब ज्यादा मुझे कुछ शेयर करना है नहीं, I don't want to confuse you guys much because it's like 2 months left for the mains। So now if you guys have any doubts, please go ahead। ईशान, जरा स्क्रीन को हाँ ऊपर सर, करना, पहले वाले उस पे आना, कीवर्ड पे बस डिस्कस। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है ना, द आरटीआई एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन एम्पावरमेंट और अलोन, इट इसेंशियली रीडिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डिस्कस। ठीक है, इसमें क्या प्लीज। दिक्कत आएगी ना कि आरटीआई पे लोग जो है एक पेज भराएंगे, हाँ कब चालू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर हाँ वैसे हुआ, फिर ये हुआ, ये अमेंडमेंट हुआ, ये भराएंगे, बस वहीं पे मिस्टेक हो जाएगी। फिर बाद में आके रोते हैं कि यार पेपर तो पूरा किया था, चीजें तो पूरी करी थी, नंबर ही नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन की जो डिमांड है ना, थोड़ा सा एफर्ट अगर मारोगे कि डिमांड के, और पीवाई क्योंकि हम लोग अभी सेशंस कंडक्ट करवाएंगे सारे के सारे पेपर्स के, तो उसमें समझ में आ जाएगा। बट थोड़ा सा ये माइंड में लेके चलना है कि क्वेश्चन को ना 2 बार पढ़ लो, यार एक्चुअल में डिमांड क्या है, क्या आरटीआई इस क्वेश्चन की डिमांड है या फिर डिमांड कुछ